Please come close, inshallah. There are some brothers still praying. We should be mindful of those who are still praying. Those of us who are finished, we could come close, inshallah. Go forward. Coming closer, sitting together is a sign of Iman, sign of love and Muhabbah. Allah increasing our Iman. Try our best as much as possible to sit together. সাড়ে নয়টায় তো খানা নামাজের আগে হবে 9টা পর্যন্ত যদি السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. One more time, our brother, those who have gap little bit in front, please come closer, inshallah. Then we get the full benefit. Our time is very valuable. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allah give us tawfiq and opportunity and give us chance, send us to this world to prepare ourselves for real life which is coming after death. And our time is very limited, journey is so long, at least 120,000 years on the way to reach to the destination. Last person who died from this world, at least he will stay in the grave 40,000 years. Not according to our calculation. Calculation of Allah totally different. Like for example, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a mercy for the whole mankind. He gives us the brief idea, distance between the sky and earth 500 years. But until now, thousand years passed on the human beings. Nobody knows how far the sky from the earth. Everybody knows. कितने दूर है अभी तो पता नहीं चला.
लेकिन अल्लाह रसूल ने बता दिया 500 साल के फैसला है. Based of this calculation, not our calculation, at least we have to cross the 120,000 years to reach to the destination. In the grave 40,000, in the day of judgment 50,000, in the bridge of Sirat 30,000, at least 120,000 years to cross to the destination. Long journey. Everybody knows if someone have long journey, he is taking preparation from long time ago. Our time is very limited. Journey is so long. And purpose and aim and goal very high. Nobody knows how long we'll stay over there, how much we need over there to pass our time. जन्नत में गुजारने के लिए हमें क्या चाहिए वो हमें पता नहीं है तफसील से. Nobody knows. Even the Quran and Sunnah never give us any limitation. Forever. They say you have to be very serious. Our each moment are so valuable in the eyes of Allah. Just for a second, if someone coming to this world, immediately he returning to Allah, directly go to the Jannah forever. 1 second is so valuable. To allow him to enter the Jannah. 1 second के लिए कोई बंदा दुनिया में आ जाए, एक बच्चा पैदा हो गया, immediately he died. For a second, Allah give him such a reward, he will be dweller of Jannah forever. हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे. तो दुनिया का टाइम कितना कीमती है, how valuable. We try to understand. It's very serious matter. They say all Anbiya alayhi salatu wassalam, they was the restless. They never taking rest. जितने अम्बिया दुनिया में आए वो बहुत सीरियस थे, कभी जिंदगी में आराम का तसव्वुर नहीं किया. They never dreaming, they never thinking to take some rest, because very great purpose, long journey, serious matter. We have to be very cautious. This is Allah subhanahu wa ta'ala, He is a Kareem and Rahim. Rahman, Rahim, repeated His name twice. One is enough. Bismillahir Rahman is enough. But He repeating His name, Rahman, Rahim. Out of His mercy, Allah gave us the opportunity, send us to this world. Ulama saying, why are you coming to this world? We was in Jannah, we can continue over there. We coming here facing a lot of difficulties. The ulama saying in the base of light of tafsir, he said it's very necessary. Allah created the human being in such a manner or such a fitra, his nature, without struggling, he cannot get the taste of anything. मेहनत के बगैर कोई मज़ा चखने की तौफीक इंसान में नहीं है. लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला. मेहनत के बाद ही मज़ा फीलिंग में आ सकता है, एहसास हो सकता है, शुऊर पैदा हो सकता है. This is Allah sent time being for this dunya, for the distance in between Allah and our heart. We have kind of feeling. Then after we are meeting again with Allah subhanahu wa ta'ala, we get the full taste. This is the nature of the human beings. Allah created such a way. ये दुनिया में भेजने का मकसद ये है कि आखिरत की लज्जत हमें हासिल हो. बहुत बड़ी बात है. It's very serious matter. If you was in the Jannah from beginning, we didn't get any test or anything. This is our time in this life. It's very, very serious matter. This is Allah subhanahu wa ta'ala sent 124,000 Anbiya to clear up the matter and purpose of the human beings, aim and goal of the whole mankind. Allah sending 124,000 teachers to explain this matter. इंसानियत को अपने मकसद को जाहिर करने के लिए, समझाने के लिए 1,24,000 अम्बिया को अल्लाह ने भेजा. Finally, Allah sent Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. It's very surprise issue. His work period was the 23 years,
training period 40 years is a surprise thing. How strong was that training? 40 साल उनको ट्रेन कराया, 23 साल काम करने का मौका मिला. And his work was such a powerful. All the things are coming, wrong things are coming. 610 years in this world after Isa alayhi salatu wassalam. 610 साल गुजारे. 570 years before he is born, another 40 years. 610 years. All the corruption, all the problem, all the weaknesses coming to this world in the heart of the human beings. His work such a powerful. By this time he working, remove everything, clean up the heart of the whole mankind. 600 साल की करप्शन, जितने कमजोरी, जितनी वीकनेस, जितने गंदगी दिल में आने का था आ गए, सबको दूर करने के लिए उनकी मेहनत काफी है. This is the past. And in the future, nobody knows. How long until the Qiyamah? People will benefit it from the work of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हमारे नबी की मेहनत से 23 साल मेहनत का जो नतीजा है, उनका जो बेनिफिट है, how long people will take it, nobody knows. क़यामत तक का टाइम पीरियड का एग्जैक्टली बताया नहीं गया. Fruit of the work of Muhammad sallallahu alaihi wasallam continue to benefit the whole mankind. Final stage, one time will come. Nobody can be on the surface of the earth without iman. एक ज़माना वो आएगा, on the surface of the earth you cannot find any disbeliever. बगैर ईमान के कोई इंसान जमीन में नहीं मिलेगा आपको. 100% people have iman in Allah subhanahu wa ta'ala. But this time period, 23 years, majority of his time he spent build up the quality of the iman. 13 years in Makkah. This is the main foundation of our deen. दीन के बुनियादी चीज जो है उनके लिए 13 साल मक्का में अल्लाह के रसूल ने मेहनत की. 13 years just for the iman and akhlaq. Iman such a valuable things, such a powerful. If someone achieve the nur of iman, his heart will be enlightened. Remove all kind of bad qualities. ईमान किसी के दिल में आज ला यस्तमी व शुहुन वल ईमान फी क़ल्बिन, लॉट ऑफ हदीस इज देयर. अगर किसी के दिल में ईमान की नो रोशनी आ गई तो दिल में कोई खराबी नहीं रह सकता. नो बैड क्वालिटी इन द हार्ट ऑफ द बिलीवर्स. ईमान वाले के दिल जो है 100% क्लीन, इनलाइटेड विद द नूर ऑफ ईमान. कोई बुरा अखलाक, कोई बैड फीलिंग cannot remain in the heart of the believers. This is the main matter, the condition of our heart. ये जो दुनिया में इस्लाम और दीन की तालीम चल रहे हैं, तमाम कुरान और हदीस के मैटर, टारगेट एंड एम एंड गोल इज चेकिंग द कंडीशन ऑफ द हार्ट ऑफ द इंडिविजुअल. तमाम कुरान हदीस के जो पर्पस है वो अपने कंडीशन, दिल के कैफियत को चेक करने के लिए, हाउ टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ आवर हार्ट. दिस होल कुरान एंड हदीस. Rasulullah sallallahu 23 years, let's just work day and night. According to some narration coming beside the Ramadan is coming, alhamdulillah. Beside the Ramadan, 5 or 6 times Rasulullah sallallahu come to his musalla to connect with Allah himself and the whole mankind. Tahajjud ki namaz mein 5 या 6 martaba he going to his bed. Again he'll come back restless, making wudu, coming to the musalla, pray few rakat, again going back, again coming back. 5 to 6 times. If someone coming to the musalla, how much time will remain in the night? क्या ख्याल है? कोई बंदा रात में 5-6 मरतबा वुजू करके नया तैयारी करके न्यू प्रिपरेशन coming to the musalla, how much time remain for the rest? Think about it. Not for the Ramadan, the general schedule, normal schedule. Then says in the hadith, or short time, يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره لرمضان. Rasulullah was so serious, ahead of 2 months, he teaches the dua for the whole ummah
Oh my ummah, you have to make dua to Allah. Special occasion are coming. Allahu Akbar. Special gift for the ummah of Muhammad, the month of Ramadan. It's not ordinary things. You have to make dua to Allah 2 months ahead. 2 महीना पहले से अल्लाह से रोते रहो, मांगते रहो, ताकि अल्लाह पाक तुमके रमजान के बरकत अल्लाह हासिल कर दे. It is not ordinary things. 2 months ahead. Teach us the dua. Allahumma barik lana Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. In the month of Sha'ban, he becomes so serious. Almost whole month he is fasting to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. More connection, then we get the full benefit. Agar aim and goal are fixed ho jaye, then arrow goes to the target. In the beginning stage in Makkah al-Mukarramah, no environment, even in the house of Allah in Makkah al-Mukarramah. Baitullah is there, but environment not is there. This we are going to Ghar Hira to build up the connection. Baitullah ghar ke samne hai, few 100 feet. But environment nahi hai. Environment is needed, it's very serious matter. This is going to Ghar Hira. Sometime he is spending time in Ghar Hira, complete 1 month. जावरतु हिरा बिशहर. बाज़ रिवायत में है पूरा महीना. How to build up the connection with Allah, which is the main matter, main subject, main purpose of the life, and main matter for the whole mankind. They should be connected with Allah 24 hours. All over the world today are suffering people. Main problem, disconnection. Our heart are disconnected from Allah. तमाम दुनिया में परेशानी का मेन सबब यह है कि हमारे दिलों का कनेक्शन कट गया. For example, there is no electricity in the whole house. What do you think? Everybody will be worried. अगर यहाँ electricity चले जाए, so what will happen? Everybody will worry when you go out. If you catch someone, or maybe whole dunya today, because there is no nur of Iman, no light of Iman, through which light we can get the direction. We can meet with our Lord. They say one after another. Rasulullah 13 years, he tried his best how to build up the Iman, connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Everybody was, their Iman was the stronger than the mountains. Hadith came. Their Iman was the stronger and firm than the mountains. Nobody gets ready to remove the mountains from area to other area. क्या ख्याल है? कोई बंदा को हिम्मत नहीं है कि पहाड़ी को छोड़ा. Iman was more stronger than their mountains. Their Iman was such a strong. Any situation, any circumstances coming, they never become hopeless. Even the Prophet Muhammad, Allah trained him such a way. All the door of dunya is closed. Nobody accepting his da'wah. Briefly story, long story, he went to the Taif. They rejected. He could not come to his house even. ताइफ से वापसी के बाद अपना घर पे आने का भी माहौल नहीं है. Waiting in the mountains area. According to some narration, 3 days. He not get any access. Permission नहीं मिला अपने घर पे आने का. तो वो निकल गया शहर से आने नहीं दो उनको. Whole dunya is closed. But Allah, Kareem and Rahim, creator and sustainer, controller, he said, "Oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I will open the new door for you, which is never ever opened for anyone." अरे मोहम्मद पूरी दुनिया के दरवाजा बंद हो गया, मैं तुम्हारे लिए एक दरवाजा ऐसा खोलूंगा जो किसी इंसान के लिए कभी भी खोला नहीं गया. I'll take you to my throne. Allahu Akbar. पूरी दुनिया के दरवाजा बंद है. Allah is the Kareem, Allah is the Qadir. Allah opening the new door for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और किसी नबी के लिए भी नहीं खोला गया. Musa said, "We can talk with Allah from Kuhe Tur, it's okay anytime. It's permitted." But above the sky, that area preserved for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nobody can go over there. When all the door of the dunya is closed,
Why Allah took the his slave Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Mi'raj after the Taif incident of Taif? The hikmat is there. Allah तो इससे पहले भी ले जा सकते थे. Allah want to clarify, to probe and dalil. So all the door is closed, whole dunya against you, doesn't matter. I am with you. I will open the new door. Don't worry. ये बात साफ करने के लिए अल्लाह की मदद और नुसरत सबसे ज्यादा ऊपर है. पूरी दुनिया अगेंस्ट में है, कोई परवाह नहीं. अल्लाह हमारे साथ है. अल्लाह हमारे दरवाजा खोले. This is the connection. This is the main purpose of the all ibadah. ये जितनी इबादत हैं सबसे मकसद वही है. Who will be the more closer to Allah? This is three kind of fasting. It's a long story short, our time. This is a special kind of training in the month of Ramadan. Allah wants to train the ummati of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Make us his beloved friend. Allah इस उम्मत को करीब करना चाहते हैं और किसी उम्मत के ये मौका नहीं मिला. This is the only opportunity for the ummati of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Train them whole month. They can be very close to Allah, for which purpose Allah created. Pura mahina. Last 10 days, nobody can stay outside. They forget everything. All the connection is cut off. We are only for Allah in His house. क्या ख्याल है? Ramzan have attraction. Lot of people, they never even coming to the masjid in the whole year. We're not criticizing or blaming. The situation here very weak for the dunya. Make us senseless. Senseless, sick person, he do not know where he is. When admitted in the hospital, giving the IV or maybe injection, he gets some sense. Oh, I am in some new place. Our situation, dunya, make us the senseless. When listen some bayan and speech, oh, little bit sense are coming back. Oh, I have to do something. क्या ख्याल है? ये पूरी दुनिया ने हमने मदहोश कर दिया, बेहोश कर दिया. बेहोश नहीं है. कुछ सुनने से थोड़ा सा होश आता हो, हमें तो ये होना चाहिए. Like a senseless person. दुनिया ने हमें खत्म कर दिया. In the month of Ramadan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah showering His mercy such an amount. Even those people, they never coming to the masjid, in the month of Ramadan they start coming. Say Alhamdulillah. क्या ख्याल है? पूरा साल कभी नहीं आया. Why? Mufassirin saying, Allah showering His mercy in such an amount. All the vehicles and car or the senior people, they stop. They cannot walk, they cannot go ahead. बारिश अंदर भारी है, इतने heavy rain, they cannot walk, they cannot go ahead. क्या ख्याल है? हेवी रेन जब होता है, तमाम चलाने वाले गाड़ी स्टॉप कर देते हैं. क्या ख्याल है? होता है या नहीं? जितने भी माशाल्लाह एक्सपर्ट ड्राइवर है, you cannot see anything in front of you. सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है. बारिश इतने ज्यादा आ रहा है, बंद करना ही पड़ेगा. Allah showering His mercy such an amount in the month of Ramadan. Majority of the sinner people, they stop their car. They have to come back, return to Allah. They are coming to the masjid. क्या ख्याल है? तमाम दरवाजा बंद हो गया. इतने ज्यादा अल्लाह ने रहमत बरसाए. तो गुनाहगार से गुनाहगार जो उनके दिल में भी थोड़ा सा मोहब्बत पैदा हो गई कि मुझे जाना चाहिए, चलो रमजान का महीना आ गया, मेरे लॉर्ड से थोड़ा कनेक्शन कर लो. क्या ख्याल है? उनको भी याद आ जाता है. तो रमजान के महीना, इट इज नॉट ऑर्डिनरी मंथ. दिस रसूलुल्लाह टीचर्स द दुआ 2 months ahead. Every individual should ask from Allah. And himself, in the month of Sha'ban, majority of the month, majority of the days of the month, he fasted. And last 15 days is a general commandments. Nobody can fast. To prepare yourself for the Ramadan. आखिरी 2 हफ्ता जो है जनरल कमांडमेंट्स है पूरी उम्मत के लिए. आखिरी 2 हफ्ता यूजुअली नफल रोजा वगैरह की इजाजत नहीं है. You have to prepare yourself for the great purpose. If you are sick, you can treat it. If it doesn't have halal food, make some arrangement. Maybe your earnings are doubtful is there. The ulama saying, at least you can take some loan, eat the halal in the month of Ramadan. किसी के कमाई में मशकूक चीज़ है, माफ़ कीजिए. This is the situation all over the world today.
मुसलमानों की कमाई में 100% हलाल मिलना बहुत मुश्किल हो गया, माफ कीजिए. So you can prepare yourself. One morsel of haram food coming to your stomach, 40 days your dua not accepted. How big damage is there? एक लोकमा हराम हो जाए तो 40 दिन तक उनका कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है, कोई इबादत कबूल नहीं. The last 15 days you have to take full preparation. हलाल खाने का इंतजाम करो, अपने सेहत के लिए थोड़ा सा तदबीर करो, सेहत अच्छी हो जाए. इबादत में थोड़ा सा दिल लगाओ ताकि कनेक्शन हो जाए. पहले से थोड़ा सा तैयारी होना चाहिए. शिकारी जब जाते हैं हंटिंग के लिए, he taking some preparation. क्या है? We were sending the arrow. क्या ख्याल है? तीर छोड़ने से पहले तैयारी होता है या नहीं? The last 2 weeks, in general, 100% men and women from the ummati of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have to prepare yourself. This is a special time. Allah give us the option by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह के रसूल के जरिया से 2 हफ्ता तैयारी के लिए स्पेशल टाइम मुकर्रर कर दिया. How great mercy is of Allah. अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, पूरी उम्मत के लिए वक्त दिया गया कि तैयारी करो. Ulama saying 3 kind of fasting is there. Our time is short, very brief summary. Number 1 fasting, which is the so-called fast. Most of the people they know, we are not eating, no drinking, no relation between the husband and wife, even the halal. We have to control ourselves from the halal things certain hours because of the commandments of Allah, to control the enemy, very strong enemy Allah created inside the human beings. हर इंसान के अंदर बहुत बड़ा सख्त मजबूत एक दुश्मन है. इसको कंट्रोल करने के लिए चंद आवर अल्लाह गिव अस द प्रेस्क्रिप्शन, एक प्रोसीड्यूर मेथड है हाउ टू कंट्रोल योर एनिमी. Food is halal, drink is halal. Husband and wife for each other is halal. But few hours you have to stay away for the great purpose, to get connection with Allah subhanahu wa ta'ala. This is a general advice. A lower level, 3rd class. 2nd class of the fasting, you have to do the 5 things. Control your tongue from the talk and from the eating food and everything. Control your eye. Fasting person cannot use any bad word. Hadith came, if someone using bad word against you, you can say, brother, I am today fasting, I am fasting today. I cannot give you answer. कोई बुरा भला कहे तो जवाब ये देना चाहिए, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाया, तुम ये बता दो मैं रोज़ादार हूँ, तुम्हारे जवाब नहीं दे सकता हूँ. The controlling our eye. I cannot see any unlawful area, any haram things. No iPhone, no iPad, no TV, no haram thing, men and women. Everything is prohibited because I leave everything for my Lord. मिसाल दे एक बंदा समझाने के लिए मुख्तसर बात में. एक लड़की, she walking in the street, one brother came, he said, I love you. And she was very smart, girls. She said, why you love me? You can go behind. There is a more beautiful girls than me. You can go to her. He went over, he didn't find anything. He come back, he said, you are lying? You deceiving me? He said, no, I am not liar. You are the liar. Why you tell me that you love me? When I told you to go to behind, there is another beautiful girl. If you had true love for me, how will you go over there? और समझते हो, और सच्ची मोहब्बत है फिर तो मुझे छोड़ना नहीं था. You leaving everything for Allah, how you can have something else in your mind? क्या ख्याल है? खाना पीना सब छोड़ दिया अल्लाह के लिए, फिर दूसरे की तरफ फिर क्या कनेक्शन हो सकता है? जिससे उलमा से हदीस के, even the husband and wife cannot see each other with some other intention, which is a relationship is there in the month of Ramadan. While we are fasting, रोज़ा के वक्त में मियाँ बीवी भी दूसरे ख्याल से देखने की इजाज़त नहीं. This is the damage for your fasting. कमजोरी है. You have to 100% pure. अल्लाह के लिए सब छोड़ा हमने. 100% love of Allah. 24 hours only for Him. We never seen.
control your tongue, control your eye, control your ear. You cannot hear any bad word. कोई बात कर रहा है गलत, इससे हट जाओ. This is the hukum in the Quran. If someone talking some wrong thing, as a mu'min, you have to protect yourself. You cannot share with this people. कोई बंदा खराब बात कर रहा है, बुरी बात कर रहा है, उनके साथ बैठना, उनके करीब जाना मना है. इसके करीब जाना नहीं. Stay away. You have to control your eye. You have to control your stomach. You have to be very, very serious. One morsel of haram damaging the 40 days ibadat. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, food was halal. The long story, this was agreement in between the servant. He bringing something every day as an agreement, according to agreement, for his masters. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. अपने मालिक के लिए रोजाना कुछ देना था. He bringing some food according to his agreement. It's halal for him. But only things, Abu Bakr was so hungry. Every day he asking before taking the food. But that day he was so serious, he never find the time to ask from where are you bringing food, how is food made. इतने ज़्यादा भूखा था तो उसको सवाल करने का मौका नहीं मिला. One morsel he took it. Then he realized, oh, I did the mistake. I took one morsel of food without checking. बात समझते हैं? हम मोमिन हैं, हमारी ईमान की हिफाजत की जरूरत है. हर लुकमा से पहले चेक करना फर्ज है. सब मुसलमानों. We are not ordinary creation. After he asking the question, he said, I get the food in such and such a place. But there is no any clarification about the how they made the food. कैसा बनाए वो पता नहीं. Then he start vomiting. He said, one morsel food in the empty stomach. Finally he said, no, I can die even, but I cannot agree, I cannot allow this food can stay in my stomach. And narrating the hadith is ajib, a surprise. All the Mufti and Karam, all over the world, they gave the fatwa, is okay. ये तो agreement के बारे में, according to his agreement, he get the food is halal. But he said, no, man ghuziya bil haram fahuwa awla bin nar. He said, if someone eat one morsel of haram, definitely he go to the Jahannam. It's a doubtful food. He said, I can die, but I cannot allow to stay this little food in my stomach. How much was the serious? खाने के बारे में बहुत. If you want to make your dua acceptable, one important condition, your food must be halal 100%. किसी के दुआ अल्लाह के पास कबूल होना चाहिए. इनके लिए बहुत बड़ी एक शर्त है, उनके खाना 100% halal हो. So many times food coming to the masjid, we do not know from where coming, what is the source, how they made the food. Don't mind, brother. This is our situation. Good feeling not enough. We have to check. कहाँ से खाना आ रहा है? इसका sources क्या है? ये हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है. Like someone have diabetes, before taking his food, he checking, is it beneficial or harmful? क्या ख्याल है? कोई डायबिटीज वाला हर वक्त तो चेक करता है कि ये खाना हमारे लिए मुनासिब है कि नहीं. How are the iman? Iman is the more valuable things. How to protect the condition of the iman? I have to check each morsel before taking. बहुत जरूरी है. In short, number one condition, control your tongue, control your eye, control your ear, control the stomach. Number 5, all the limbs of the body. Stay away from the all kind of haram things. Then we have to have some kind of feeling in your heart. I don't know, my ibadat and my a'mal are acceptable by Allah or not. Fear of Allah. Because we are weak. We have lot of shortcomings. हमारी इबादत अल्लाह के पास मकबूल होगा कि नहीं, हमें पता नहीं है. Even the certificate given by Allah in the Quran, radiyallahu anhum wa radu anhu. Lot of times Allah mentioning about the companion of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ने certificate दिए, "अमालो मा शि'तुम क़द ग़फ़रतु लकुम."
Whatever you can do is allow for you. After the Badr, Allah becomes so happy with you. Oh people who accompany of Muhammad Sallallahu, your sacrifices are so beloved to Allah. Allah becomes very happy. Allah give you the permission, you can do anything. Allah will forgive everything in the future and past. आगे पीछे के सब गुनाह अल्लाह माफ कर देंगे. They get the surety from Allah, certificate given by Allah. Still they are worried, crying night after night. Long time. पता नहीं कि इन सर्टिफिकेट के ऊपर मेरा मौत होगा कि नहीं. But today our nafs and shaitan giving the certificate, you are the good. Why? You praying 5 times. You are the good, you are fasting. You are the good Muslim because you are making Hajj, performing the Umrah. You are reading the Quran. You are doing this and that. इस किस्म के सर्टिफिकेट हमारे नफ्स शैतान ने हमें दे दिया. This way you become satisfied. May Allah forgive us. क्या ख्याल है? हर मुसलमान दुनिया में अपने आप को मुतमईन समझते हैं. माशाल्लाह मैं अच्छा हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, कुरान पाक तिलावत करता हूँ, हज ज़कात करते हैं. It is wrong. Be serious, be careful, think about it. हमें देखना चाहिए हमारे रोल मॉडल क्या है साहबा का. तो हम ये कह रहे थे कि सेकंड लेवल ऑफ द रमज़ान we have to control we have to fulfill this condition. Controlling the tongue, controlling the eye. In the month of Ramadan, all the TV, all the iPad, oh children, it should be off in the month of Ramadan. Try our best to get the full training. क्या ख्याल है? क्या नियत कर सकते हैं? रमजान को सेव करें. अगर रमजान is okay, next 11 month will be okay. It's a training. It is not gaining the reward or forgiving the sin, which is the wrong idea existing today among the Muslimin. मुसलमान ये समझते हैं रमजान आ गया कुछ नेकी हम हासिल कर लेंगे, गुनाहों का अल्लाह माफ कर देंगे. दिस इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट. दिस इज नॉट पर्पस ऑफ रमजान. रमजान का मकसद ये नहीं है कि नेकी कमाओ, गुनाहों से माफ मिले. नहीं, ये तो एक्स्ट्रा अल्लाह पाक देंगे. इफ यू गो टू विजिट योर चाइल्ड, योर डॉटर एंड सन, यू गेट द नाइस फूड. क्या ख्याल है? लड़की के घर में गए बाप लड़की को देखने के लिए, अच्छा खाना तो मिल ही जाएगा, अच्छा बिस्तरा बैठने का मिल जाएगा, लेकिन ये पर्पस तो नहीं है. क्या ख्याल है? कोई अच्छा खाने के लिए लड़की के घर में जाता है? नहीं, उनके हाल पुरसी के लिए जाता है. दिल की कैफियत क्या है? मेरी लड़की हैप्पी है कि नहीं? क्या ख्याल है? पर्पस ऑफ विजिटेशन नॉट नाइस फूड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो रमजान का मकसद नेकी कमाना नहीं है, गुनाहों का माफी का नहीं है. ये एक्स्ट्रा वर्ड अल्लाह पाक की तरफ से है. अल्लाह बुलाते या बाग़ अल खैर अक़बिल व या बाग़ अल शर्र अक़सिर. ओ माय स्लेव, ट्राई योर बेस्ट, use the full ability to move up little bit. This is the opportunity I give you by virtue of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हमारे आखिरी नबी की तुफाइल में तुमको अच्छा मौका दे दिया. तुम कंपटीशन करो, आगे आओ, रोजाना तुमको बुला रहा है फरिश्ता. क्या ख्याल है? It's a time of competition. हदीस के शॉर्ट टर्म तुज़य्यनुल जन्नह मिन हौलिन ला हौल. Ramadan not ordinary action. Allah decorate the Jannah throughout the whole year for the fasting person. पूरा साल जन्नत को सजाया जा रहा है कि रोजादार आएंगे. अल्लाहु अकबर. रोजादार आएंगे जन्नत में. Special door is there. Whole year work going on. How to make the fasting person happy? क्या ख्याल है? पूरा साल. There is some people, they are waiting also for the Ramadan whole year. When we get another chance to get the month of Ramadan. उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं पूरा साल इंतजार करते हैं कि रमजान दोबारा मिल जाए. क्या ख्याल है? कुछ लोग. साल का मसला है. But there is some people, they do not know even the Ramadan is starting. They are ghafil. May Allah forgive us. क्या ख्याल है? कुछ लोग ऐसा है कोई खबर नहीं है उसको. It's very serious matter. لا يتقدمن أحدكم بصوم يوم أو يومين لرمضان. The Surah says, be careful. You have to know the exactly point, exactly main matter. You cannot start the Ramadan 1 day, 2 days before. No. क्या ख्याल है? बात समझते हो? जो मेहमान आएगा उसी को इस्तकबाल करना, वेलकमिंग. Before half an hour you are doing something. No. You get the point? जब रमजान शुरू होगा उसी से शुरू करो. Be careful. You have to know the masail. A lot of ruling is there. Sit with the ulama. And you have to create some zeal and desire
in the heart of every individual. In the month of Ramadan, situation should be such in the whole area. Nobody committing the sin. Nobody look at to the haram scenery. Whole year will be like a part of paradise. मुसलमान अगर रमज़ान को ऑब्जर्व करेंगे सही तरीके में तो मुसलमान का एरिया तो जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा. बात समझते हैं? ये ऑर्डिनरी मंथ नहीं है, दूसरे महीना की तरह नहीं है, रमज़ान का महीना है. पूरा एरिया में एक आम रहमत की हवा चलेगी, एक पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा. Everybody will be busy with the name of Allah. The higher condition, 3 levels. Lower level, which is the before. In general, Muslim understood food and drink and relation with halal, we have to stay away for a few hours. Why? To control myself from the haram things throughout the whole year. रमजान की ट्रेनिंग का पर्पस यह है कि हलाल से बचते रहो, तुम्हारी ये एबिलिटी पैदा होगा ताकि आगे 11 महीना हराम से बचना मुमकिन हो जाएगा. यह है पर्पस ऑफ द रमजान. 11 महीना के लिए ट्रेनिंग है. ट्रेनिंग का पर्पस ट्रेनिंग पीरियड नहीं होता, सबको मालूम है. क्या 6 महीना ट्रेनिंग दिया सब जॉब पैसा सब मिल जाएगा? नहीं, काम करना पड़ेगा. क्या ख्याल है? ट्रेनिंग का पर्पस है, यू हैव टू डू योर जॉब, यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी प्रॉपर वे. दिस इज द पर्पस. ये ट्रेनिंग का पर्पस नहीं है कि ट्रेनिंग करके छुट्टी नहीं. They control this. This is the second level of the Ramadan. You controlling your body. Higher level, your heart must be connected with Allah 24 hours. In the month of Ramadan, no time, no opportunity to think about anything else. Allah in our heart. Allah के अलावा और किसी चीज के फिक्र करने का, सोचने का कोई मौका रोजादार को नहीं है. Because he leave everything because of him. क्या ख्याल है? जिसके लिए दवाना बने उसी को तो याद करना है. क्या उसी के गान गाना है, उसी के बातें करना है. जिसके लिए पागल बने उसी को तो कहते हैं. क्या पागल को देखा था हमने? जो पागल होता है दवाने के 2 खासियत है, वेरी इंपॉर्टेंट. When the pagal goes to the bazaar area even, very rush, 2 khasiyat, 2 effect is there. Number 1, in the front side will be empty. Everybody say, oh, pagal coming, dawana coming, crazy coming, leave him to go. पागल जो बात है सामने का रास्ता क्लियर हो जाता है. क्या ख्याल? सब बंदा रास्ता क्लियर कर देते हैं. Second group of the people, they are following the crazy person. What are you doing? Follower. People are in creating the follower. बात समझते हैं? पागल का 2 खासियत है बहुत आम. एक है सामने का रास्ता क्लियर है और फॉलोअर बन जाते हैं. इसी तरीके से मोमिन अगर अल्लाह का पागल बनेंगे, सामने का रास्ता क्लियर है जन्नत तो, और पीछे कुछ लोग फॉलोअर बन जाएंगे. बिकॉज ऑफ द वन इंडिविजुअल, मिलियंस एंड मिलियंस पीपल विल बी सेव इन द डे ऑफ जजमेंट इन द दुनिया बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट. उनके फॉलोअर बनेगा इन द डे ऑफ जजमेंट. Millions and millions people go to the Jannah behind the ummati of Muhammad. You know this thing. मैदान हशर में जब अंबिया भी परेशान होंगे, उम्मत मोहम्मदी में ऐसे कुछ लोग होंगे जिसके पीछे लाखों लोग जन्नत में जाएगा. This is the 3 level of the Ramadan. You have to listen carefully. Number 1, which is the general meaning people understood, eating, drinking, relationship, halal, but have to stay away for some special reason. Look at connection with Allah. अल्लाह से कनेक्शन जोड़ने के लिए इन चीज़ों से अपने आप को अलहदा करो ताकि तुमको थोड़ा सा मौका मिले. Second level, to control the whole body. You cannot use your any ability in the wrong place. सुनना, देखना, बोलना, खाना, चलना, हमारी तरफ से कोई wrong चीज़ रमज़ान में ना हो. Higher level, spiritual things. Our heart must be connected with Allah. In Ramadan, mashallah, Allahu Akbar, you forget everything. Just for Allah. You will be only and solely to remember Allah subhanahu wa ta'ala. उसके दिन में और कुछ नहीं. सिर्फ Allah ही Allah. This is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sometimes his situation came, he cannot recognize his wife even. Hadith came. Someone asking the Aisha, who are you? He said, I am Aisha. The Rasul said, who is Aisha? And then second time she said,
I am the daughter of Abu Bakr. He said, who is Abu Bakr? Forget everything. Specifically in the time of Tahajjud, special time, his situation was so close to Allah, he forget everything about this world. He cannot recognize even the wife and father-in-law or anyone else. बात समझते हैं? बंदा कंप्यूटर में लग, हमारे बच्चे ऐसा होता है. Lock the room, he is very busy with some program. Even the father calling them become angry. क्या ख्याल है? बच्चा को पता नहीं लगता बाप ने बुलाया, माफ कीजिए. वो इतना बिजी है, आवाज भी सुनते नहीं. क्या ख्याल है? If someone gets so busy, he cannot have any realization about other outside how going on. मछली शिकारी जो है, पता नहीं आप लोगों में है कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वाले, मछली शिकारी जो होता है उसको जाता है मछली शिकार करने के लिए पानी में. They were so busy looking very carefully. Even the sometime weather is changed, he cannot know, he do not know anything. क्या ख्याल है? उनको पता नहीं लगता क्या हो रहा है दुनिया में. So concentrate about that. क्या ख्याल पता है? खिलवाड़ लोग होता है, playground, some children, they are so busy and they forget everything. After the sunset, some children, they are so busy, mashallah, looking the good scenery. But after sunset, in the darkness, he starts crying. क्या खोल होता है? खेलने में बच्चा इतना होता है मशगूल, तो सूरज का गुरूब हो गया, अब रोने लगे, कैसे जाएंगे घर पे? We get so busy with the dunya. We forget the akhirah, forget Allah, forget the Jannah. How beautiful place are waiting for us. How beautiful time we can pass with the name of Allah. अल्लाह के नाम के साथ वक्त गुजारना क्या मज़ेदार है, क्या शानदार है. लोग भूल गए, सब भूल गए दुनिया के साथ. टाइम नहीं मिलता. So in short, may Allah give all of us tawfiq. This is the little bit time Allah give us opportunity. I am also very lucky. I am not able to say anything about the Deen and Quran and Sunnah, but for repeating my lesson, maybe someone will be the benefited. हम अपने सबक को लिसन करते हैं. मैं जी भी तैयारी करना, हो सकता है आप लोगों को भी फ़ायदा मिल जाए. अल्लाह हमारे रमज़ान को कबूल फरमाए. In whole area, we have to do some ta'aleem in our houses to create the zeal and desire in our household. हमारे घरों में फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम करें ताकि पूरा हाउस होल्ड वो भी तैयार हो जाए. एक माहौल के साथ हमारे दीन की हिफाजत होगी. बगैर माहौल के हिफाजत नहीं है. तो इंशाल्लाह सब तालीम करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह के रास्ता में निकलने की भी कोशिश करें ताकि रमज़ान में हमारा टाइम सही गुजारे. अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, मस्जिद के माहौल में रहेंगे, तमाम बुराई से अल्लाह हिफाजत, विल बी प्रोटेक्टेड. तो नियत करो अल्लाह के रास्ते में जाए, घर पे तालीम करें. दुरूद शरीफ पढ़ो. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना, अल्लाहुम्मा या रब्बना, या रब्बना, या मौलाना, या सय्यिदना, या गायतल रग़बतिना, या खालिक़ अनफुसिना, ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन. रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार. रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा. अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान. ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा. अल्लाह हमारे अमाल को तो कबूल फरमा. पूरी उम्मत के लिए हिदायत की फ़ैसला फरमा. गैर मुसलमान हमारे भाई हैं, आपके हबीब के उम्मती हैं. अल्लाह इस मुल्क में या अल्लाह जितने लोग हैं बहुत अच्छे हैं, या अल्लाह इन सब को तो हिदायत नसीब फरमा. या अल्लाह बाबा आदम से लेकर आज तक जितने लोग ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो गए, सबको मुआफ़ फरमा दे. इनके कब्र को बहश्त के बाग बना दे. हमारे माँ बाप के कब्र को या अल्लाह उनकी जन्नत की बाग बना दे. या अल्लाह बीमारियों को शिफा नसीब फरमा. मुसीबत ज़ादों को मुसीबत से हिफाजत फरमा. कर्ज़दारों से कर्ज़ के नजात की ज़रिया बना दे. उस वक्त या अल्लाह से निकलने की या अल्लाह कोई सूरत पैदा फरमा दे. या अल्लाह तमाम दुनिया में मुसलमान परेशान हैं, उनको गैब से मदद नुसरत फरमा. हमारे ख़ात्मा बिल खैर ईमान के साथ नसीब फरमा. हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत बार बार हमें नसीब फरमा. या अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं मदारिस, मसाजिद, मराकिज़ जितने हैं, जितने एक्टिविटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, अल्लाह एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम. Ya Allah, give us tawfiq, we get the full barakat from Ramadan. Ya Allah, give us tawfiq to prepare our household. Allah, give us tawfiq to prepare our friend circle. All the Muslimin, they can get the full benefit from the Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. For any word harm you, forgive me. कोई बात से तकलीफ हो माफ़ फरमाए.